Namaste ji viewers, today we are on a special tour and today's vlog will be special because today's vlog will be a motor vlog where we are going to ride on this hills of Sikkim, and we are going on a very special place that we are going to reveal. So you can see the beauty of the nature, the mountains and everything over here. It's there is one pharmaceutical companies right down there, and today we have a special partner over there, and this is the X-Pulse Hero. It's a 250cc and we have been riding, and we have already started our journey at 6. Now we are going to move on. So today we are on a special tour, and we are going for a special tour to a place which is a bit spiritual and it's quite natural. And today's vlog will be maximum you will be able to see the motor blocks and see the hills of Sikkim. And I'm with Rinji brother, and also we have 2 new members that we are going to introduce in this vlog. So watch till the end and we will explore now. Let's go. Let's start the ride, Rinji bro. So as I've already talked about the 2 new members which I'm going to introduce. So he is Rawat Bhai, the chill dude, and we have Devasis Bhai, the storyteller and the sire, and as you know him, Rinji bro, the handsome hunk. Today we are here at Namchi. Namchi is in Sikkim, and the name suggests Nam means sky and Chi means high. So it is a place of high sky, it can be said. So this is the Chardham of Namchi, and it is the replica of the Chardham. So this is the entrance of the Chardham. So as you go inside, you will see it is a very well constructed building, very clean and well maintained,
and they have an entry ticket system with 50 rupees as the detail is given. So this is the entrance, and after taking the ticket we entered, and first of all we saw the idol of Lord Shiva, and we move towards the entrance. We are at Chardham, which is 78 kilometers from Gangtok, and you can see the idol of Shiva, Lord Shiva, which is 78 feet. And this temple was established in 2011, and it's quite old, you can say. It's around like 13 years. So you can see the idol is very well maintained and it's very neat and clean. There are 4 dhams, which is the replica, and it's quite beautiful. It's a tourist location of Sikkim, and it is also a religious cum cultural place. So that's it. ये चारधाम होता है, हाँ। उसी का रेप्लिका है। आप हाँ। बोल सकते हैं उसके बारे में कुछ? मैं बोल क्या सकते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा थोड़ा रेप्लिका तो है। मैं एक ही धाम गया हूँ अब तक, जो हमारे उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ धाम। हाँ। उसका कितना धाम होता है ऐसे? हमारे उत्तराखंड के भी अलग 4 धाम होते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, हाँ। केदारनाथ, बद्रीनाथ। हाँ। बाकी भारत के भी 4 धाम है, ओके। जिसमें रामेश्वरम है, हाँ। बद्रीनाथपुरी है, जगन्नाथपुरी और द्वारकाधीश। धाम को थोड़ा एक एक करके, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? बताइए कहाँ से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहाँ से करें? नॉर्थ से करते हैं। नॉर्थ काफी सुंदर होता है। क्या बोलते हैं देवाशीष ब्रो? तो हम लोग हाँ एकदम हेड से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये है ना चारधाम। बद्रीनाथ। वही जो, पर इतना सारा लिखा है यहाँ पर। ये एक्स्ट्रा होंगे सब, ये मेन है ये। पर ऐसे कौन सा? बद्रीनाथ और गंग, बद्रीनाथ सिर्फ धाम तो बद्रीनाथ धाम है इधर। ये उत्तराखंड का? यस, उत्तराखंड में। ओके, ओके। सेम रेप्लिका है। हाँ, सेम टू सेम। Same, मैं गया हूँ ना, ऐसे ही है? हाँ सेम ऐसे ही है। ओके। तो ये बद्रीनाथ धाम है, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? ये उत्तराखंड में धाम जो मेन है, इसका ये तो रेप्लिका है। ओके। मेन धाम उत्तराखंड में है, जैसे उत्तराखंड के ये विष्णु जी का टेम्पल है, मतलब विष्णु जी विष्णु का है, विष्णु जी का ओके, ओके। रहता है। So ऐसे ही रेप्लिका है उधर? सेम टू सेम, Same to same, ना? Okay. So of the 4 Chardham, we have this another dham, that is the Jagannath Dham, and this dham is dedicated to Lord Krishna, and it is believed that the heart of the Lord Krishna beats here, isn't it? Yeah. कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा का है वहाँ पे, जहाँ पे अपने सिबलिंग्स के साथ बालभद्र, सुभद्रा, उनकी सिस्टर। तो हर साल इनकी यात्रा भी निकलती है। आपने सुना होगा जगन्नाथपुरी की यात्रा होती है, रथ यात्रा निकलती है। काफी फेमस यात्रा है वो। वो उधर उड़ीसा की तरफ है इनका टेम्पल, तो वहाँ पे रहता है। कहते हैं इनका दिल है जो आज भी मतलब है वहीं पे, जगन्नाथपुरी में इनका दिल है। ये है आपका रामेश्वरम धाम, तो जो कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु में आपका सिचुएटेड है। तो लोग यहाँ पे इस मंदिर को पूरे श्रद्धा से जो इसको मेंटेन करके रखते हैं। बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन है, एक शांति है, एक यो चाहिँ अब चारधाम बेसिकली लोकलिटी नाम्ची होइन, सबै थाहा छ। यो सिक्किममा पर्छ है। यो बेसिकली अब तपाईँको जो चाहिँ जानु सक्दैन, चारधाममा को लाइफमा पुग्दैन भने चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले चाहिँ हाम्रो यहाँ सिटिजनहरूलाई चाहिँ बनाइदिएको रेप्लिका, जो चाहिँ अब 4वटा धाम छ प्लस शिवजीको स्ट्याचु पनि छ। अन्त यो बेसिकली जुन चाहिँ ढल्का धाम देख्दैछ, लर्ड कृष्णलाई चाहिँ उनीहरूले डेडिकेटेड गरेको यो चाहिँ खासमा चाहिँ है। यसमा अन्त बेसिकली कृष्ण भगवानको पूजाहरू हुन्छ। अन्त यहाँ हेर्नु हुँदैछ द्वारका धामको मिनी रेप्लिका बनाएको छ। राम्रो छ, लोकेसन पनि राम्रो छ, आज दिन पनि राम्रो भइरहेको छ। हिजो शिवरात्रि थियो, अन्त हिजो त जानु पाएन, हिजो त अफिसले गर्दाखेरि हो। आज चाहिँ अन्त त्यही छुट्टीमा आएको। स्टैचू है हम लोग का आगे, यहाँ भी गुरु पद्मा संभव बोल के, ये गुरु था बेसिकली, ठीक है, जो बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए सिक्किम में आया था।
तो बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए गुरु पद्मसंभव इधर आया था, उसके रिगार्डिंग एक उनका एक होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने एक ट्रिब्यूट दिया है कि उनका स्टैचू इधर नामची में इनॉग्रेट किया, बना भी दिया।